next chapter is capacity of parties. Capacity of parties का मतलब ये है कि जो कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं लोग, are they capable of entering into a contract? लॉ ने क्या डिफाइन किया हुआ है और उस डेफिनेशन के मुताबिक क्या लोग केपेबल हैं या नहीं है. Now, before we start the capacity of parties, we need to understand a few things. For example, एज की बेस पे कुछ डिविजन्स होती हैं लोगों की. फॉर एग्जाम्पल, स्टार्टिंग विद एज ऑफ मेजॉरिटी. एज ऑफ मेजॉरिटी डिफरेंट कंट्रीज में डिफरेंट होती है. In Pakistan, it is above 18 years. So if you are above 18 years of age, you have attained the age of majority. If you are less than 18 years of age, you will be known as a minor. And you have not attained the age of majority if you are less than 18 years of age. For a valid contract, the parties to a contract must have the capacity, that is, competence to enter into a contract. Now, Section 11 of the Contract Act deals with the competency of the parties to a contract, which means that every person is competent to enter into a contract who is of age of majority. This is number one. According to the law that he is subject to, and who is of sound mind. This is second condition. And has not been disqualified from contracting by the law to which he or she is subject. This is the third, not have been disqualified. So, तीन चीजें. Why are we saying ये जो हम कह रहे हैं कि law to which he is subject? इसलिए हम कह रहे हैं कि हो सकता है कि एक कंट्री के लॉ के मुताबिक एज ऑफ मेजॉरिटी इज 18, दूसरी कंट्री के लॉ के मुताबिक एज ऑफ मेजॉरिटी इज 17. So you will have to look at the age of majority according to the law, और स्पेशली जिस भी लॉ का वो सिटीजन होगा वो उस पर अप्लाई हो रहा होगा. In the sound mind, obviously you get the certification sometimes from the doctor कि हाँ इसको कोई issue है या नहीं है, तो वो आपको बता सकते हैं. There are some diseases which can be taken as not being sound mind. And then third is the disqualification. Disqualification कैसे आती है? अगर आपने एग्जाम्पल एक पर्सन है, उसने बैंक से लोन लिया, बैंक को वापस नहीं किया, बैंक के साथ फ्रॉड किया, और बैंक जो है इसको सू करता है, तो कोर्ट्स ऑर्डर करती हैं कि इस बंदे के साथ कोई भी आइंदा ट्रांजैक्शंस, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं हो सकते. तो इस तरीके से डिस्क्वालिफिकेशन हो सकती है. नाउ फ्रॉम द अदर एंगल, people who are incompetent to contract, opposite to competent. Minors are not competent to enter into a contract if you have age less than 18 years. इसका मतलब है आप कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते. पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड, जिनको कोई ऐसी डिजीज या ऐसी बीमारी है, कोई ऐसा मसला हो, तो दे कैन नॉट एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट. Persons disqualified by any law to which they are subject. For example, according to Pakistani law, अगर आपको कोर्ट्स ने forbid किया है कि आप कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, आपकी इनकॉम्पिटेंस हो जाती है, कॉम्पिटेंस नहीं होती. So, contract entered into by persons mentioned above
are void contracts. ऐसे लोगों के साथ कॉन्ट्रैक्ट करने का मतलब ये है कि ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं होगा. Now, important question is, why do we not allow minors to enter into contract? So, a minor is one who has not completed his 18th year of age. Fine. But why should minors be protected? A minor has an immature mind and cannot think what is good or bad for him. Because of his maturity of age and understanding and experience in life, they might not be able to understand the goods and bads for their life. That is why minors are often exploited, because they are immature. So they must be protected by the law from any exploitation. What if minors make an agreement? So an agreement with a minor is a void agreement. It is not a valid agreement. For example, a minor hired a car and took full responsibility of the damage of the car. Rent a car se usne car rent kar li. If the car is damaged, the minor cannot be sued. Why? Because he is a minor. The rental car person should have been careful while making the contract. इसके साथ मैंने contract नहीं करना, because he will not be able to pay the damages. इसको simple तरीके से पहले ऐसे समझते हैं. Let's suppose if a person is of age of 17 years and 7 months, ये उसकी एज है, और वो कोई अग्रीमेंट करता है, कॉन्ट्रैक्ट तो कर नहीं सकता अकेला, तो वो कोई अग्रीमेंट कर लेता है. अग्रीमेंट की टर्म्स एंड कंडीशन सेम है, सब कुछ सही है. सो जैसे ही वो 18 years का होता है, नाउ इज द एज ऑफ मेजॉरिटी. क्या वो ये कह सकता है कि ये जो मैंने एग्रीमेंट किया था when I was 17 years 7 months old, इसी कॉन्ट्रैक्ट को मैं आगे लेके चलता हूं? That is known as ratification. या इसी कॉन्ट्रैक्ट की बेस पे मैं आगे कोई और कॉन्ट्रैक्ट कर लेता हूं, इस एग्रीमेंट की बेस पे मैं कोई कॉन्ट्रैक्ट कर लेता हूं. दिस इज नॉट पॉसिबल. बट सिंपल, अगर उसको यही वाला एग्रीमेंट दोबारा करना है, he will have to sign a new agreement. चाहे टर्म्स एंड कंडीशन सारी सेम हो, इसका कोई इशू नहीं है, बट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम he will be having a new contract. इस कॉन्ट्रैक्ट की बेस पे नया कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता. Now, this is another important thing to understand. Can minor be beneficiary? Yes, big yes. Beneficiary का क्या मतलब है कि अगर कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है जहां माइनर को सिर्फ बेनिफिट हो रहा है और माइनर पे कोई लायबिलिटी नहीं आ रही, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स माइनर्स बना सकते हैं. Minors can be beneficiary. For example, a minor is capable of accepting profit. Any contract is valid which is for the benefit of minor, as under which the minor is not required to bear any obligation. Because normally contract में दोनों लोग bear कर रहे होते हैं, loss भी profit भी. बट अगर तो माइनर को सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट आ रहा है और लॉस इस पे नहीं अप्लाई हो रहा, देन ही कैन फॉर्म अ कॉन्ट्रैक्ट. वन पार्टी टू अ कॉन्ट्रैक्ट इज अ माइनर, लायबिलिटी ऑफ द अदर पार्टी इज अफेक्टेड. माइनर पे कोई लायबिलिटी नहीं आएगी, दूसरी पार्टी पे
लाइबिलिटी आएगी. माइनर कैन ओनली बी बेनिफिशियरी. फॉर एग्जाम्पल, A minor delivered some goods under an agreement to B. B ने रिफ्यूज कर दिया पे करने के लिए. Why? Thinking माइनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, मैं नहीं पे करता इसको. The court held that A should be paid. माइनर को पैसे मिलने चाहिए. अग्रीमेंट था ना, बट एग्रीमेंट में जहां माइनर का फायदा हो रहा है वहां कोई इशू नहीं है. वहां कोर्ट यही डिसाइड करेगी कि दिस इज लीगल, उसको बेनिफिट मिलना चाहिए. बट जहां उसका नुकसान हो रहा है वहां प्रॉब्लम आएगी और वहां उसको हो सकता है कि उसके लिए लीगल ना हो. सो माइनर कैन बी बेनिफिशियरी. नो एस्टोपेल अगेंस्ट अ माइनर व्हेन वेयर अ माइनर बाय मिसरिप्रेजेंटिंग हिज एज has induced the other party to enter into a contract with him, he cannot be made liable on the contract. No contract is formed. इसका मतलब ये है कि अगर किसी माइनर ने लेट सपोज कॉन्ट्रैक्ट करते वक्त दूसरे बंदे को ये कहा है कि मैं माइनर हूं, सॉरी मैं मेजर हूं, आई हैव अटेन्ड द एज ऑफ मेजॉरिटी, और दूसरा बंदा उस पर यकीन करके उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लेता है, फिर भी कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं होगा. बिकॉज अगेन माइनर इज प्रोटेक्टेड. माइनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकते. यस, अगर उसने कोई फ्रॉड किया है या झूठ बोला है या कुछ ऐसा इशू है तो वो उसके साथ माइनर के साथ अलहदा से डीलिंग हो सकती है लॉ की, बट कॉन्ट्रैक्ट एक्चुअली फॉर्म नहीं होगा. इवन अगर वो आपको कन्विंस कर भी लेता है कि वो एज ऑफ मेजॉरिटी अटेन कर ली है. So, no estoppel against a minor. No insolvency. A minor cannot be declared insolvent as he is incapable of contracting the debts and dues are payable from the personal properties of a minor and he is not personally liable. So, आप minor को कभी भी ये नहीं कह सकते कि तुम्हारे एसेट्स जो हैं वो तुम्हारे लाइबिलिटीज से कम हो गए हैं एंड नाउ यू आर इंसॉल्वेंट. सो पार्टनरशिप, अ माइनर बीइंग इनकॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट cannot be partner in a partnership firm, but he can be admitted to the benefit of the partnership. फुल पार्टनरशिप में वो नहीं आ सकता बिकॉज जहां आपको अनलिमिटेड लाइबिलिटी वाला प्रॉब्लम आता है वहां आप माइनर को पार्टनर नहीं बना सकते. बट इफ इट इज ओनली फॉर द बेनिफिट ऑफ द पार्टनर देन ही कैन फॉर्म अ कॉन्ट्रैक्ट है एंड ही कैन बिकम अ पार्टनर. माइनर बी एन एजेंट. एजेंट मींस एम्प्लॉय हो सकता है कि नहीं हो सकता. अ माइनर कैन एक्ट एज एन एजेंट, यस, but he will not be liable to his principal for his acts. Principal is the employer, agent is the employee. तो ये उसके किसी भी नुकसान का जिम्मेदार नहीं होगा. हाँ, काम कर सकता है, सैलरी ले सकता है, वेजेस ले सकता है, दैट इज फाइन. जहां तक बेनिफिट है वो ले सकता है, बट कोई भी नुकसान अगर इससे होता है तो he or she will not be responsible. A minor can draw, deliver, endorse negotiable instruments without himself being liable. Negotiable instruments, actually, we'll have a detailed chapter on that. चेक वगैरह कहते हैं, चेक या promissory notes होते हैं, इनको negotiable instruments कहते हैं. तो ये negotiable instruments लिख सकता है, बट अगर कोई उसमें fraud या कोई ऐसा element आ जाता है तो minor will not be liable. Can minor bind his parents or guardians? In the absence of authority, express or implied, an infant is not capable of binding his parents or guardians, even for the necessities. The parents will be held liable only when the child is acting on behalf of the agent. For example, एक बच्चा किसी रिटेल स्टोर पे जाता है और वहां जाके कोई लेट से चॉकलेट खा लेता है.
ریٹیل اسٹور والا اس سے جب پوچھتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ میرے پیرنٹ سے پیسے لے لیں. This is holding your parents liable. This is not possible unless پیرنٹس نے خود اس بچے کو بھیجا ہو اور پیرنٹس کے ہوتے ہوئے اس نے کوئی فار ایگزامپل چاکلیٹ کھا لی ہے. نو پیرنٹس آر ریسپانسبل اور گارڈین از ریسپانسبل. بٹ joint contract by a minor and adult, yes it is possible. ایک adult which means age of majority ایک بندے کی ہو اور دوسرا جو ہے وہ minor ہو. اگر یہ دونوں مل کے کانٹریکٹ کرنا چاہتے ہیں کسی سیکنڈ بندے کے ساتھ, so this is one party and they want to enter into a contract with some other person, yes contract ہو سکتا ہے. But minor will only be beneficiary and جہاں liability کا ایشو آئے گا وہ adult کو pay کرنی پڑے گی. So minor will not be responsible for the liability. Adult جو ہے وہ liability کا ذمہ دار ہوگا. Surety for a minor. In a contract of guarantee, when an adult stands surety for a minor, then the adult is liable to third party as there is a direct contract between surety and the third party. For example, normally کیا ہوتا ہے کہ اگر ایک minor جو ہے ہم سپوز کر رہے ہیں وہ کسی سے لون لیتا ہے لیکن minor کو یہ لون نہیں دیتا نارملی, تو ایک کوئی surety اس میں آتا ہے جو اس پرسن کو گارنٹی دیتا ہے کہ میں اس کی گارنٹی دیتا ہوں اور اگر یہ لون پے نہیں کرے گا مائنر تو میں پے کروں گا. تو اس صورت میں مائنر لون نہ پے کرے تو اس پہ کوئی پرابلم نہیں ہے. شورٹی ول ہیو ٹو پے دا لون. پرائمری ریسپانسبلٹی شورٹی پہ آتی ہے. Minor as shareholder, a minor being incompetent to contract cannot be a shareholder of a company if by mistake he becomes the member of the corporation. It can be declared void and transaction can be removed, and also his name should also be removed from the ownership list or the shareholder list. He is not capable enough of understanding the matters of the corporation, so he should not be made a shareholder. So next is the person of unsound mind. The second category of the people who are not capable of entering into a contract is the person of unsound mind. So as per section 11 of the Contract Act, for a valid contract, each party to the contract must have a sound mind. So this is the criteria, that you must have sound mind. Now, why do we say that a person must have sound mind? Because we read the criteria of meeting of minds. So if there is no mind, then obviously there is not going to be meeting of minds. So contracts made by a person of unsound mind are void contract. And the reason is that a contract requires assent of two minds, but a person of unsound mind has nothing which the law recognizes as mind. So if he or she is not capable enough of understanding the terms and conditions, then obviously there's going to be no contract. But here we need to be very careful that unsoundness of mind does not mean weakness of mind or loss of memory. It means not only lack of capacity to understand the terms and conditions of the contract, but also the lack of understanding to realize the effect of the terms and conditions of a contract. So, ہمیں بھی بہت ساری چیزیں سمجھ نہیں آتی. For example, when we go to the lawyers, وہ اس لیے ہم جا رہے ہوتے ہیں کہ ہم کافی ساری لیگل چیزیں نہیں سمجھ سکتے. بٹ اس کا یہ مطلب نہیں ہے that we have unsound mind. اور
ٹیمپرری لاس آف میموری یا تھوڑا سا دماغ کا تھوڑا سا ویک ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کانٹریکٹس نہیں کر سکتے، بلکہ انساؤنڈنس آف مائنڈ میں زیادہ پرابلم یہ ہوتا ہے کہ آپ ایون یہ بھی ریلائز نہیں کر سکتے کہ اگر آپ نے فلفل نہ کیے پرومسز تو اس کے کانسیکوینسز کیا ہوں گے. سو دیر اٹس اے پرابلم. آپ جو ہے وہ جو لیگل آبلیگیشن ہے اس کو بھی سمجھ نہیں پاتے. اس میں فردر کیٹیگریز ہیں. ایگزامپل ایڈیٹس. نارملی ہم ایسے ورڈ یوز کر لیتے ہیں وداؤٹ انڈرسٹینڈنگ the core meaning of it. So an idiot is a person with no intervals of understanding or no intervals of senses or no interval of saneness. He is incapable and his mental power of understanding even ordinary matters are absent because of the lack of the development of brain. So idiots are defined like this, who does not develop their brain because of some illness or some maybe genetic issue. That is why agreements done by idiots is a void contract. They cannot form a contract. Even if they form a contract, it will be known as void contracts. And there is a case of 1957. A property worth of 25,000 rupees was agreed to be sold by a person of only for 7,000. So his mother proved that he was a congenial idiot, incapable of understanding the transactions, and the sale was held void. تو یہ کوئی انسین پرسن تھا جس نے 25,000 کی پراپرٹی اس ٹائم پہ 1957 میں 7,000 کی سیل کرنے کے لیے اگریمنٹ کر لیا تھا. سو بعد میں کورٹ کو یہ پروف کیا گیا کہ بائی برتھ ایڈیٹ ہے، سو اس وجہ سے وہ سیل جو ہے کینسل ہو گئی ہے. Now, how do we do this? Usually by bringing the medical certificate. Contracts done with idiots are not valid contracts. Then we have the lunacy or insanity. Now, it is also a disease of brain. A lunatic loses the use of his reason due to some mental strain or disease. He may have lucid intervals of sanity, which means kuch der ke liye wo theek ho jata hai, and he can enter into a contract during that period when he is of sound mind. So kuch time ke liye یہ انسینٹی آ جاتی ہے، کچھ ٹائم کے لیے سینٹی آ جاتی ہے. جب وہ سینٹی میں ہو which means جب اس کا بالکل برین پراپر کام کر رہا ہو وہ کانٹریکٹ کر سکتا ہے، بٹ ادروائز وہ کانٹریکٹ نہیں کر سکتا. Then there is drunkenness because it produces temporarily incapacity. آپ obviously اس میں نشے میں ہوتے ہو، انٹاکسیکیشن ہوتی ہے، اور آپ کو جو انڈرسٹینڈنگ آپ کی جو پاور ہے that is lacking for some time. Till the man is under the effect of intoxication, creating impotence of mind, stands on the same footing as a lunatic person. If you are drunk, there are no contracts that you can make. Then we have the hypnotism. For example, it is also a temporary incapacity till the person is under the impact of artificially induced sleep. So some people are expert in hypnotism and they can put the other people to sleep for a little while. Usually your eyes are open but your mind is sleeping.
your mind is not capable enough of understanding what is happening around. So that is also a situation in which you cannot make a contract. Then we have the mental decay. It is on the account of old age and maybe some other diseases. Like many people in old age, they get Alzheimer's, Parkinson's disease. उसमें क्या होता है उसमें they also lose the capacity to understand things. When they lose the capacity to understand things, then they cannot enter into a contract. The third thing is the person who has been disqualified from contracting by any other law. So first of all, we need to understand these two things: alien friends and alien enemies. Now, whenever you are in a country, you have some kind of status. For example, if we are living in Pakistan and we are citizen of Pakistan, we have all the rights. Whichever rights are mentioned in the constitution, we have all of them. But what if we go to some other country? For example, what if we go for a tourist with a tourist visa? We do not have all the rights. For example, we cannot cast a vote, we cannot start any employment, or many other rights are, we cannot enjoy any other rights. Only we are there for the purpose of tourism. Alien is a person who is in your country, but he is not the citizen of your country. So she is a person जो दूसरी कंट्री में जाता है मोस्टली टूरिस्ट वीजा पे या टेम्परेरी स्टे पे, उसको आप एलियन कहते हैं. ही डजंट हैव ऑल द राइट्स, बट उसके साथ क्या हम कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? सो सर्टेन कॉन्ट्रैक्ट्स व्हिच आर अलाउड बाय द गवर्नमेंट वो आप कर सकते हैं. बट एलियन फ्रेंड और एलियन एनिमी कौन है? एलियन फ्रेंड एक्चुअली वो है आपकी कंट्री और उस सिटीजनशिप वाली कंट्री, जिस भी कंट्री का वो सिटीजन है, इफ दे आर एट पीस, ही इज द एलियन फ्रेंड. बट इफ योर कंट्री and the country which he belongs to, for example, start fight or a war, not fight, but a war, then they become your alien enemies. So you're allowed to do contracts with your alien friends, but you're not allowed to do contracts with your alien enemies. So citizens of countries with which you are at war, you're not allowed to do contract with them. An alien is a competent to contract with the citizen of Pakistan living in Pakistan. So if the alien is living in Pakistan, he can maintain an action on the contract entered into him during the peacetime. But if a war is declared, an alien enemy cannot enter into a contract with a Pakistani citizen. So this is the concept of alien friend and alien enemy. Then there are some foreign sovereigns, they are also known as MA minors. For example, many people from other countries are working in Pakistan, and especially the, for example, your ambassadors. They are working in Pakistan, if they are living in Pakistan for a long time, what is their status? Now, these persons are immune from the jurisdiction of local courts. मैं अभी आपको मतलब समझाता हूँ. Unless they voluntarily submit to its jurisdiction, these persons have the right to contract, but can claim the privilege of not being sued
फॉर एग्जाम्पल आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, लेकिन ये अपने पास ऑप्शन रख सकते हैं कि अगर हमने परफॉर्मेंस ना की तो आप हमसे डील तो कर सकते हैं बट हमें सू नहीं कर सकते। द कोर्ट्स नॉट पनिश अस। आप अगर परफॉर्मेंस नहीं देते तो आपको ये सू कर सकते हैं, लेकिन आप इसको सू नहीं कर सकते। हाँ, अगर वॉलंटरली वो कहता है कि ठीक है, अगर कोई ऐसा इशू हो गया तो अपीयर बिफोर द कोर्ट, देन इट इज फाइन। उनको ये इम्यूनिटी होती है। Insolvent cannot enter into a contract as his property vests in the official receiver or official assignage. This disqualification of an insolvent is removed after he is discharged. So, if you have been declared insolvent by the law, तो तब तक आप कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, but the moment you are discharged from the charges that were laid on you, then you can enter into a contract. Then certain convicts, conviction होती है जब आपको कोई पनिशमेंट मिल जाती है, कोई सजा मिल जाती है जो आप पे केस कोई कोर्ट में हुआ हो. So a convict, while undergoing imprisonment, is incapable of entering into a contract, but this disability comes to an end on the expiry of the sentence. For example, अगर उसको 3 years की पनिशमेंट हुई है तो 3 साल तक वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता, बट द मोमेंट 3 years आर ओवर तो तब वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है. अब इस पे कन्विक्शन पे डिपेंड करता है कि किस वजह से कन्विक्शन हुई है. फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई फ्रॉड का केस था तो फिर वो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के कोई कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं कर सकता. इसी तरह अगर कोई सिवियर क्रिमिनल केस था तो वो फिर काफी सारे कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं कर सकता. बैंक का लोन नहीं दिया था, उसकी वजह से उसको पनिशमेंट हुई है, तो कोई लोन वाला कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता. तो इसलिए आपको देखना होता है कि किस तरह का कॉन्विक्ट है और कौन सी चीजें वो नहीं कर सकता. ओके, देन वी हैव कॉर्पोरेशंस. जैसे हमने बताया कि लीगल आइडेंटिटी होती है इनकी, सेपरेट लीगल पर्सनालिटी होती है, आर्टिफिशियल पर्सनालिटी होती है. सो ये कॉन्ट्रैक्ट कर तो सकते हैं, बट इनमें क्या प्रॉब्लम्स होती हैं. कॉर्पोरेशन इज एन आर्टिफिशियल पर्सन recognized by law. It exists only in the eyes of the law and it is competent to enter into a contract only through its agents. Because हमने पढ़ा भी था कि जो corporations होती हैं, they have the legal identity or artificial legal personality, but ये भी जब contract करेंगी तो वहां ये नहीं है कि आप सिर्फ किसी नेस्ले या शेल की स्टैंप लगा देंगे. There has to be somebody who will be understanding these terms and conditions. Corporation ठीक है, legal personality तो है, but it doesn't have mind to understand the terms and conditions. So for corporations, there must be some agent. Agent मतलब उसका कोई ना कोई employee होगा. For example, CEO, maybe CFO इन्वॉल्व होगा कॉन्ट्रैक्ट करने में, और दूसरा जो है, अगर उधर से कोई कॉर्पोरेशन नहीं है तो उनका सीईओ फॉर एग्जांपल आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हो. नाउ नॉट फॉर आवर कंट्री बट सम अदर कंट्रीज, some professionals are not allowed to do any contract of certain nature. For example, doctors and advocates are included in this class. In England, for example, barristers are prohibited by the etiquettes of the profession from suing for their fee. So, lawyers जो हैं वो इस चीज का केस नहीं कर सकते किसी क्लाइंट ने उनके साथ फी डिटरमिन करके उनको पे नहीं की. Why? Because they are very professional. इनको तो लॉ का बहुत अच्छे तरीके से पता है, क्लाइंट को नहीं पता होता. तो जो प्रोफेशनल एटिकेट्स हैं वो उसके अगेंस्ट है. Then some people misunderstand the contractual capacity of a married woman. So a woman is competent to enter into a contract. Marriage does not affect the contractual capacity of a woman. A married
woman may sue or be sued in her own name in respect of her separate property. So there are no issues, or there should be no misconception. Married women जो हैं इनकी liability इनके husband पे होती है या कोई ऐसी चीज है. They are independent and they can make the contract, they can be sued, and they can also sue the other person. So this is about the capacity of parties.